अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। और जैसे कि हम पहले टेबल में पढ़ चुके हैं दैट ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीजन्स। Although these subdivisions are just arbitrary and on the basis of certain characters, but still we will follow this classification system because it is a phylogenetic classification system based on the ancestorhood and based on the increasing advanced characters. You will see the Hepaticopsida, which is the first subdivision. It has the general characteristics of some lower plants, and then the Bryopsida and Anthoceropsida, which are which have increased advanced characters in them. So very first we shall study the liverworts, which is the common name of Hepaticopsida, and generally it includes almost 900 species, and they are the smallest of all bryophytes, and they are the simplest one, and they have mostly very ancient characters, like they are restricted to moist places. They are unable to grow without water, although all we have studied that all bryophytes are unable to grow without water, but especially these liverworts, they are restricted to wet places only, while the bryophytes, bryopsida and anthoceropsida, can also grow in somehow dry places. They only require water for their reproduction, but Hepaticopsida, they require water or moist places for growth and for reproduction as well. And we have studied that they live near water bodies. Secondly, as we have studied that in all the bryophytes, the main plant body is gametophytic plant body. It may be thalite. Thalite means that it is not differentiated into root, stem, and leaves, or it may have certain falsely root, leafy, and stem-like structures. So here are two examples, Markentia and Porilla. The sex organs, we have studied that they are archegonia and anthridium. These are present on the plant body of gametophytes, and sometimes these organs are present on specialized stalks, and we set these stalks as anthridiophores. Four mean bearing, Anthridia bearing stalk, and the Archegonia bearing stalk. In some of the plant, the same plant bear both of the stalk. Like some of the stalks bearing Anthridia, and some of the stalks bear Archegonia. While in some plants, they have the separate plant as male plant, and they have only Anthridia in them, and the female plant which have only Archegonia in them. And we have studied that the Anthridium, it produces the sperm, while Archegonia produce the egg, and they fertilize to form the diploid zygote, and then this diploid zygote develop into the sporophyte generation, as it is shown in this diagram. Then all the rest of the life cycle will be same as we have studied it before. Then the next are the mosses. They are the common name of bryopsida, and generally bryopsida can also grow in dry places, but they require water for their reproduction, as in all the bryophytes. Then the adult plant is as usual a gametophyte. Here is the life cycle of a typical moss plant is given, and it is extremely important. You need to learn this diagram, which is figure 9.8, repeatedly. Here you can see that there are separate plants. One is the male gametophyte, which bear the anthridium, and other is the female gametophyte, which bear the archegonium.
Antheridium produce the antherozoid, which is the sperm, and Archegonium produce the egg in it. Egg will not move out from the Archegonium, only the sperm will move out from the Antheridium, and it has flagella, and the sperm will move into the water, and then through water it reaches the female plant, and it reaches the Archegonium inside the egg, and it fertilizes the egg and form the diploid zygote. Here you can see the zygote is diploid. The basic life cycle is same. Now this diploid zygote will divide mitotically and form the inside the archegonium and form the mature sporophyte generation. Now this sporophyte generation is a diploid one because it is formed through the zygote, which is dividing through the mitosis. Now this gametophyte generation, this sporophyte generation now undergoes meiosis, and before the spore formation, then the spore will form through the meiosis. These spore develop into a specialized alga-like structure, which is called protonema. This protonema has some characteristic like it has appearance like the algae, and that is how we predict that the plants have their origin from the algae. Now these spore will develop into the protonema, and these protonema then ultimately develop into the gametophyte generation. जैसे कि सभी जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल में होता है. This is the typical one. Here is another definition which is called paraphysis. Now what is paraphysis? This is given the definition of paraphysis. The archegonia and antheridia form clusters and are mixed with sterile hairs. As here you can see in the diagram that the archegonium is surrounded by some hard hair like structures, and these hair are sterile, like they are not involved in reproduction, and they are called this compact structure is called paraphysis. Then the last one, Anthoceropsida, जिसे hornbirds भी कहा जाता है. Hornbirds have many characteristics that are different from the bryophytes. Like they have independent gametophyte and independent sporophyte generation. Their sporophyte generation is not dependent on the gametophyte generation. Only in the early developmental stages जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है. अदरवाइज स्पोरोफाइट जनरेशन हैज़ इट्स ओन क्लोरोफिल, एंड इट इज़ आल्सो ग्रीन इन कलर, एंड इट इज़ एबल टू फोटोसिंथेसाइज इटसेल्फ, और अपने लिए ये फूड बना सकती है. यू कैन सी टिपिकल लिवरवर्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो बाहर का हॉर्नी स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये गेमेटोफाइट है. गेमेटोफाइट इज़ अ टफ वन. ये लोब्ड होता है और इरेगुलर होता है, जबकि जो इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है ये लेबल भी किया गया है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है. स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अपने फुट के ज़रिए गेमेटोफाइट के पर अटैच होती है. यू कैन सी दैट दिस इज़ फुट, और ये फुट जो है ये इस गेमेटोफाइट जनरेशन पर एम्बेडेड होता है. फुट के बाद सीटा मौजूद है, और इसके बाद ये स्पोर्स और स्पोर सैक मौजूद हैं जिनके अंदर स्पोर बनेंगे, और इसके बाहर एक कैप्सूल होता है इसके प्रोटेक्शन के लिए. अ वेरी पेक्यूलियर फीचर इज़ दैट, एक तो हमने पढ़ा कि इनकी स्पोरोफाइट जो है वो इट्स नो मोर डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट. दूसरा फीचर क्या है कि इनके फुट और ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है इसके दरमियान में स्पेशलाइज टिश्यू मौजूद होते हैं विच आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल, लाइक दे आर एबल टू डिवाइड रैपिडली. ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, और ये कंटिन्यूसली इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से गेमेटोफाइट की अगर डेथ भी हो जाती है तब भी स्पोरोफाइट जो है वो ज़िंदा रहता है, साइज़ में बढ़ता जाता है, और स्पोर प्रोड्यूस करता ही चला जाता है. तो ये इनकी जो है वो टिपिकल करेक्टरिस्टिक है. बाकी इनकी करेक्टरिस्टिक जो हैं वो मिलती हैं इन बाकी सभी ब्रायोफाइट से. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, और ये भी एक बहुत अच्छी डायग्राम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, इसे आप पढ़ लेंगे. ये वैसे ही है जैसे कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है स्पोर थ्रू मियोसिस, और ये स्पोर हैप्लाइड होते हैं, ये डिवाइड होकर
ये जो है वो डेवलप होकर गेमिटोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ दिस गेमिटोफाइट जनरेशन इज अ हैप्लॉइड वन एंड इट हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑन इट which are called entheridium and archegonium, which produce the sperm and egg respectively, and these sperm and egg will divide will fertilize each other and form the zygote. This zygote is diploid and this zygote develop into the sporophyte generation. So this is the typical alternation of generation which happens in the bryophytes. Now, what is the significance of alternation of generation? As we have studied before, that this alternation of generation has a peculiar feature of meiosis, and meiosis mean recombination, और recombination का मतलब है change, variety, diversity. जितना ऑर्गेनिज्म जो है, जितनी स्पीशीज डाइवर्स होगी, उतने ही उसकी सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, उतनी ही उसमें जो है माहौल को अडाप्ट करने के जो आप कह सकते हैं चांसेस हैं, माहौल में ढल जाने के चांसेस हैं, अपने आप को फिट करने बनाने के चांसेस हैं, अपने आप में माहौल के मुताबिक चेंज ले आने के जो फीचर्स हैं वो सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट meiosis टेक्स प्लेस, जिसके नतीजे में बहुत से ये स्पोर बहुत से बनते हैं और ये बहुत से गेमिटोफाइट्स बनाते हैं. क्योंकि ये स्पोर meiosis से बन रहे हैं तो ये सब स्पोर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और इन स्पोर से जो गेमिटोफाइट जनरेशन डेवलप होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. तो वो गेमिटोफाइट जो कि ज़्यादा वेल अडेप्टेड होती है, ज़्यादा फिट होती है, वो ग्रो कर जाती है, जबकि जो लेस फिट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं. इस तरह से जो बेटर अलील्स हैं, जो बेटर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं. सो दैट इज़ ऑल विद टुडेज़ लेक्चर. कल हम जो है वो डिवीजन ट्रिक्योफाइटा स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लें. होपफुली आपको इसको समझ आ जाएगी. इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.